Alaikum salam. So in the last class, we saw that if you have a conic and some line is there, so it will be intersecting any conic at most 2 points. We got a quadratic equation lambda square s plus 2 lambda t plus s dash is equal to 0, where your s dash was, whereas is your equation of a conic which I am considering second degree polynomial by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. S dash means if you have a point which is satisfying this, suppose this point is satisfying, we are passing through some p. I was assuming that this line passing through a point p, x dash, y dash, and this point a, this is some point q. So this a is dividing it, lambda is to 1 ratio. So this quadratic equation you got here, and s dash means if this point is satisfying the conic, so you can write a x dash square plus 2h dash y dash plus by dash square plus 2gx dash plus 2fy dash plus c is equal to 0, and t means the coefficient of lambda, so it was coming ax x dash plus h xy dash plus yx dash plus b y dash plus g x plus x dash plus f y plus y dash plus c is equal to 0. These are the values of these s dash t. I will be using it in some other proofs also. So because it is quadratic, it will be having 2 roots. So we discussed 3 cases. The 2 roots are there of this equation. इसको अगर हमने number 2 दिया था, so 2 roots are there. Equation 2, you can say equation 2 has 2 roots. Then there are different cases. First case was when roots are real and distinct. And that case, the line meets the conic at 2 different points. When roots are real and equal, then the line meets the conic at the coincident points. Third point was remaining, I think. 1, 2 is already there in lecture 2. Third point, if roots are imaginary, in that case, imaginary. That means your discriminant b square minus 4ac of this less than 0. Then there is no point of intersection. When then we say there is no point of intersection. No point of intersection between line and conic. Line and conic. However, this imaginary points, they are important in analytical geometry. One branch of mathematics is there, analytical geometry. In analytical geometry, we are interested in imaginary point also. So in analytical geometry, these points are important. These imaginary points are important. There they use this imaginary concept also. These imaginary points are important. But here in quadratic geometry, we say that there is no connection between a line and this conic. It is just passing through like this, not intersecting the conic if your roots are coming imaginary. So next we can find equation of a tangent to a conic by a simple calculation. What is the equation of a tangent? And you will see that this t is coming equation of a tangent. इसे मैंने t से denote किया था यहाँ पे. This that is t was what? It was the coefficient of 2 lambda in the equation. So it will be the equation of a tangent. We can derive it, in fact, equation of a tangent. To a conic.
So we have all the consideration are same. We have equation 1. We have s ax square plus 2hxy plus by square plus 2gxy plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0. Equation 1 है. We got the quadratic. You get quadratic equation. Lambda square s plus 2 lambda t plus s dash is equal to 0. It is equation 2, where we know what is s, t and s dash. ये मैंने यहाँ लिखा, ये same है, s, t, s dash. So now, what is my consideration that suppose you have a conic and a line is tangent. Tangent means what now? Initially this line was here, but now what happening? If this line is just touching this, then it will become a tangent line. So you can say that this is the limiting case of state. Limiting case means what? If you have 2 points here, A and B, so what's happening? When these A and B are moving towards each other, then this line will become a tangent line. ये line tangent कब बनेगी? क्यों भाई? Geometrically, when this line will become a tangent line? When the distance between A and B is 0. Or you can say when A and B coincide. Sir, what you have written in second equation, lambda 2s plus S 2 dash lambda t plus 2 lambda t है या प्लस है? ओके, t है, t है. ओके वही सर, इक्वेशन है जो मैंने लिखी थी, ये बताया ना मैंने भी. ये जो 2 इक्वेशन है, सेम क्वाड्रेटिक ओके इक्वेशन. ओके सर, या अंडरस्टूड. Yes, good. So what will happen when A and B will be coinciding? The line will become a tangent, है ना? You can see here. When the point of intersections A and B coincides, है ना? The line, इस line को मैंने अगर नाम कुछ दिया था, PAB दिया था शायद. The line PAB will become a tangent line. Will become a tangent line. Yeah, you can say will become a tangent to the conic. To the conic 1. Conic हम 1 ले रहे हैं. तो that point will be shifting now here, है ना? तो इसको अगर हमने, तो we can say अगर ये point x dash y dash लिया हुआ हमने, so I can say that means if you are taking this point now x dash y dash, suppose this point is now, this is point x dash y dash in place of this when I am shifting here. So what will happen? Your s dash will be 0. Okay, s dash will be 0. So when s dash will be 0 here, so what happened? I have equation, so equation 2 becomes lambda square s plus 2 lambda t is equal to 0, or you can say lambda s plus 2t is equal to 0. So you got here 2 roots. क्योंकि lambda quadratic है, तो 2 roots will be here. Lambda 1 is equal to 0 and lambda 2 is equal to minus 2t upon s, है ना? इससे lambda की 2 वैल्यू निकल रही है, तो एक वैल्यू 0 को मैंने lambda 1 मान लिया, दूसरे को ये, तो ये रूट्स हो गए ये. These are the 2 roots of lambda. ये lambda quadratic थी. Now what's happening? For a tangent line, what I told you, for a tangent line, the roots must coincide. So roots must be equal. For a tangent line, the point of intersection must coincide. And A and B जो है coincide होना चाहिए हमारा. So you can say the roots must equal. For tangent, lambda 1 and lambda 2 must be equal. That means इन्हें equal कर दें अगर हम, तो minus 2t upon s is equal to 0. This implies that t is equal to 0. ये आपके पास टेंजेंट की कंडीशन निकल है ना? वो ये जो मैंने यहाँ आपको बताया था, यहाँ भी मैंने आपको जब I was placing the second condition रूट्स में कि रूट्स आर इक्वल ना, रूट्स आर इक्वल,
तो यहाँ पर ये बताया था कि रूट्स इक्वल में क्या होगा, आपके पास सेम रूट्स आएंगे, तो टेंजेंट की कंडीशन थी, है ना, आई टोल्ड यू इन दिस लेक्चर, यू कैन सी माय रिकॉर्डेड लेक्चर। तो वही है कि रूट्स आर इक्वल में मींस क्या हो रहा है कि और डिस्क्रिमिनेंट वाज 0 यार, डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा था इसका, सो यू विल बी गेटिंग दिस, ये वही है आपका डिस्क्रिमिनेंट 0, है ना, क्या आएगा देखो। सो हेयर यू गॉट टेंजेंट इज इक्वल टू 0, टी क्या था, टी वाज द इक्वेशन दिस। तो यू नो कि अगर आपको टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली तो हम कैसे लिखते हैं, ये तरीका होता है टेंजेंट की इक्वेशन लिखने का। टी इज इक्वल टू 0 मींस योर ए एक्स एक्स डैश प्लस एच एक्स वाई प्लस वाई एक्स डैश प्लस बी वाई वाई डैश प्लस जी एक्स प्लस एक्स डैश प्लस एफ वाई प्लस वाई डैश प्लस सी इज इक्वल टू 0। मीन्स क्या किया आपने, अगर आप इसको इफ यू वांट टू मेमोराइज दिस, तो यू कैन टेक के एक्स स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय एक्स एक्स डैश, और जो 2x का टर्म है ये बन जाएगा x प्लस एक्स डैश, x plus 2y टर्म विल बिकम y प्लस वाई डैश। तो कोई भी कोनिक हो उसकी इक्वेशन आप ऐसे टेंजेंट एट अ पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं। जैसे अगर आपके पास कोनिक है, सपोज वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, पैराबोला ले लूं मैं, स्टैंडर्ड पैराबोला ले लिया। तो इफ यू वांट टू फाइंड अ टेंजेंट एट अ पॉइंट x डैश y डैश, यू कैन राइट y y डैश इज इक्वल टू 2a x प्लस x डैश, है ना, ये लिख सकते हैं। इट इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x डैश y डैश, है ना, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, टेंजेंट इज अ लीनियर इक्वेशन, लाइन की इक्वेशन हमेशा लीनियर होगी। तो यहाँ पर आपके पास y क्या, अभी लीनियर टर्म बन के देखो कि y डैश x डैश तो फिक्स है, सो इट इज अ लीनियर इक्वेशन। So this is a question of tangent of a conic. जैसे नंबर 3 चाहे आप लिखते हैं, पीछे अपने 2 लिखा था। Now next is what is the condition of tangency? Condition of tangency का मतलब क्या है कि if some linear equation is given to you, मान लो some equation of a line is given to you and you want to check whether this line is a tangent or not. तो उसके लिए एक condition होती है, condition of tangency. Condition of tangency. इस बुक की किसी बार सॉफ्ट कॉपी तो होगी नहीं आई थिंक, क्योंकि इस बुक की सॉफ्ट कॉपी तो अवेलेबल है नहीं। किसी के पास बुक है? एनीबॉडी हैज दिस बुक? नो। सर एक बार पीछे वाला पेज खोल दिए जरा। अच्छा, किसी के पास बुक है भाई ये आपकी, डॉक्टर राम वल्लभ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री? नहीं है किसी पे? चलिए, आई विल आस्क समवन कि अगर इस बुक की किसी के पास स्कैन कॉपी या किसी ने फोटो खींचे होंगे तो वो मैं आपको शेयर करूँ। हाँ हो गया सर, आगे बढ़ा दें। चलिए, आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर, अगर आप चाहें तो रिकॉर्डिंग में से आराम से देख सकते हैं बाद में, ठीक है। चलिए, condition of tangency. Suppose equation of a line is given to you. Condition of tangency of the line. General equation I am taking Lx plus my plus n is equal to 0. Okay. Means what? You have a conic and suppose you have a line whose equation, suppose is known to you, Lx plus my plus n is equal to 0. So what is the condition of this? Some point is there, x dash y, it is the point of contact. So s तो हमारा सेम है, लेट s जो आपके पास इक्वेशन 1 थी, इसमें 1 लिख दे रहा हूँ, इक्वेशन 1
be the equation of a conic. And we have to find out the condition that this line, we find the condition that Lx plus my plus n is equal to 0. सपोज इसे मैं नंबर 2 का दे रहा हूँ क्योंकि मुझे कंपेयर करने होंगे. ये इक्वेशन 1 है आपकी. These we find a condition that this becomes the tangent to the conic, tangent to 1. So we already know that equation of a tangent. We know that equation of tangent to 1 at some point px dash y dash is t ax x dash plus h x y dash plus y x dash plus by y dash plus gx plus x dash plus f y plus y dash plus c is equal to 0. और I can write, अब इसमें अगर मैं इसे x से कोफिशिएंट सेपरेट करूं y के और कांस्टेंट, तो x का टर्म इज आई एम राइटिंग हियर, तो 1 is ax dash and here hy dash and one coefficient is plus g. I am writing in terms of xy, so this is x coefficient plus y coefficient. Similarly you have by dash, so by dash plus hx dash and here plus f, and the constant term is what? So here constant term is without xy term, so without xy term will be what? gx dash, ये सब terms तो यहाँ gx dash plus fy dash plus c is equal to 0. Okay, this is the equation of tangent. Now if I am claiming that line 2 is also a equation of tangent line and this is also tangent, so what will happen? They must be identical. This is equation of a tangent line. Now if I am claiming that equation 2 is also a tangent, तो क्या होगा? 2 और 3 must be identical, है ना? Same represent करेंगे. That means I can compare their coefficients. है ना? Is it clear? Because this line is any arbitrary line, but I am claiming that this line represents a tangent line to the conic. और tangent line हम already निकाल चुके हैं. This is the tangent equation of a tangent. So they must be identical. It means their coefficients will be comparable. I can write. So you can write here if equation 2 is tangent to the conic s is equal to 0, then comparing the coefficients, of 2 and 3, you get coefficient compare करेंगे. तो here coefficient of x is this, here coefficient of x is L, है ना इसका. So that means you can say ax dash plus hy dash plus g upon L equal to y coefficient is hx dash plus by dash plus f upon m, and constant term is gx dash plus fy dash plus c upon n. This equal to suppose some constant k. से इस हमने मान लिया किसी constant k के इक्वल है ना. ये coefficient मैंने ले लिया यहाँ पे. This is the coefficient of x upon L. This is the coefficient of y upon m. This is constant. So now it will give you
three equations. So I can write, if I am taking first ratio is equal to k, so you got ax dash plus hy dash plus g is equal to kl, and h x dash plus by dash plus f is equal to k into m, gx dash plus fy dash plus c is equal to kn. सपोज इसको हम नंबरिंग कर देते हैं 3 तक था, सपोज इट इक्वेशन 4, it is equation 5, it is equation 7, and also this point P x dash y dash, this lies on the line Lx plus my plus n is equal to 0. So it will be satisfying this point. That means you got Lx dash plus my dash plus n is equal to 0. Equation 7. So you got 4 equation for x dash y dash in terms of x dash y dash. तो यहाँ से I can eliminate x dash y dash and k. इन 4 इक्वेशन से आपके पास क्या है, x dash y dash and k. So eliminating x dash y dash and k from the above 4 equations. From the above 4 equations. जब आप एलिमिनेट करेंगे तो आपको एक डिटरमिनेंट मिलेगी 4/4 की ऑर्डर की. वी गेट क्या, इनके कोएफिशिएंट लिख देंगे a h g, और यहाँ पर इसको मैं l लिख दूंगा ना. कोएफिशिएंट अगर हम इसे मैट्रिक्स बनाए तो आपका a h g, और ये आपके पास जो कांस्टेंट कॉलम है, तो आई कैन राइट a h g l. दिस इज योर फर्स्ट रो. सेकंड h b f, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमिनेट x डैश y डैश और k को, तो इनके कोएफिशिएंट्स हमने लिख लिए h b f m g f c n l m n 0. This is equal to 0. You will be getting this determinant of order 4/4, which is the required condition of tangency. Required condition of tangency. क्या कंडीशन होगी टेंजेंसी कि अगर आपको कोई लाइन गिवन है और कोनिक की इक्वेशन गिवन है, तो उसको आप पुट करेंगे डिटरमिनेंट में और यू विल सॉल्व दिस डिटरमिनेंट, है ना. इट विल गिव यू द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी. सॉल्व करने के लिए इसको आपको क्या करना होगा, पहले एक्सप्लेन करेंगे वैसे ही साइन लगा के प्लस माइनस. तो यू विल एक्सप्लेन ए फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो कर रहे हैं अगर मान लीजिए, तो a टाइम्स 3 दिस डिटरमिनेंट, फिर इसको फिर सॉल्व करना होगा ना. a टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ एडिंग फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. b f c m n आपको गिवन होंगे. m n आर द कोएफिशिएंट ऑफ lx प्लस my, and this b f c are the coefficient from the folio. ऐसे ही माइनस h, फिर एक डिटरमिनेंट heading first row and second column and so on. In this way you can solve it. जैसे एक प्रॉब्लम है आपकी एग्जाम्पल 1 है, आई थिंक ये एग्जाम्पल 1 पेज नंबर 71 from your book. Find the equation of the tangent at the point -2, 1 to the conic x square plus 2xy and minus not plus minus y square plus 2xy
प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, ये कोनिक की बिना आपको कोनिक क्या आप पहचान सकते हैं अगर कंडीशन लगा के देखेंगे कि कौन सा कोनिक है। यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो टी की क्वेश्चन मैंने आपको बताई थी अभी, एक्स एक्स डैश उस फॉर्म में रखेंगे, इसे निकाल लेंगे। ठीक है, से एग्जाम्पल 2 है, दिस इज आई एम लिविंग फॉर यू। बस टी की क्वेश्चन निकालनी है आपको। यू कैन डू इट स्टूडेंट्स। यस सर। ठीक है, सेकेंड कुछ प्रॉब्लम है इसी पे, इसी 71 पेज पे, ये सेम पेज पे। शो दैट, प्रॉब्लम मैं लिख दे रहा हूँ अगर बुक आप लो पे नहीं। आई विल ट्राई टू शेयर द सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट मीन्स द स्नैपशॉट ऑफ दिस बुक अगर किसी के पास हुए। 3D जो पोर्शन आपका इसके बाद नेक्स्ट सेमेस्टर में आता है उसका तो था, तो मैंने शेयर किया था लास्ट पेज पे। शो दैट द लाइन 4x plus 5y minus 14 is equal to 0 touches the conic x square plus 4xy plus y square minus 2x plus 2y minus 15 is equal to 0 at the point 1, 2। ठीक है, शो दैट द लाइन टच द कोनिक। क्या करना होगा आपको, क्या शो करना होगा, यू हैव टू शो दिस कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, है ना। अगर ये टच कर रहा है तो व्हाट विल हैपन, इट विल हैविंग द, या तो एक इसका आप डिटरमिनेंट 0 रख देंगे। ये कैसे आएगा, किसकी टेंजेंट इक्वेशन निकालेंगे, यू विल पुट टी हियर, यू विल फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट। वो क्या आ जाएगी आपके पास निकल के। तो यहाँ पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात हो रही है कि a line is tangent to the conic if this determinant is 0। करेंगे दोनों प्रॉब्लम का, यू कैन ट्राई दिस प्रॉब्लम। Yes. ठीक है, as I told you कि just make a copy of your coordinate geometry, जैसे आप अपने ऑफलाइन टैब में बनाया करते थे सेम, और उस पे प्रॉब्लम्स करिए और अपने नोट भी बनाए तो अच्छा है। उससे आपके पास एक कलेक्शन रहेगा, जब whenever you want you can open your copy and you can see। क्योंकि हर टाइम आप यूट्यूब लेक्चर तो नहीं देख सकते, आपके नोट सामने होंगे तो आप वही पढ़ सकते हैं उसे। क्योंकि अभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D भी आएगा आपका नेक्स्ट सेमेस्टर में, इसी का कंटिन्यूशन में, वेयर यू विल स्टडी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ओके, नेक्स्ट वन मोर प्रॉब्लम, लास्ट 3 प्रॉब्लम्स थी इसके ऊपर, एक और प्रॉब्लम है। फाइंड अ कंडीशन that the straight line Lx plus my is equal to 1। सपोज इसमें 1 का नंबर डाल दे रहा हूँ। This may touch the conic, straight line may touch the conic Lx minus my whole square minus twice L square plus m square Lx plus my plus L square plus m square whole square is equal to 0। ठीक, यहाँ पे आपको कंडीशन निकालनी है। अब ये कोनिक की क्वेश्चन ये देखिए, इन्होंने थोड़ा सा अरेंजमेंट ऑफ टर्म्स करके लिख दिया। इफ यू विल ओपन यू विल बी गेटिंग सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल Lx स्क्वायर प्लस my स्क्वायर माइनस 2Lx my, एंड यहाँ पे ये कांस्टेंट टर्म्स आएंगे, x का टर्म आएगा, y का टर्म आएगा। सो इट इज अ कोनिक। इफ यू विल ओपन इट विल कमिंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। कंडीशन हमें निकालनी है कि ये लाइन इसको टच करेगी। ये एक लाइन की क्वेश्चन दे रखी है, Lx प्लस my इज इक्वल टू 1।
So here what we will do, we will solve it. Solve करके देखते हैं कंडीशन अगर आ रही है. So I will solving equation 1 and 2. तो सॉल्व करना है मतलब क्या, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए. पुट इसको यहाँ पे रख के इसे सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपके पास. पुट Lx इज इक्वल टू 1 माइनस एम वाई. ये एम वाई की वैल्यू रख दीजिए, ये Lx की. Lx इज इक्वल टू 1 माइनस एम वाई, हमने इसे 2 में रखा है, इसमें इन 2 वी गेट. तो जब Lx इज इक्वल टू 1 माइनस एम वाई रखा, देखिए क्या आएगा, 1 माइनस एम वाई, एक एम वाई ऑलरेडी है, तो यू गॉट 1 माइनस 2 एम वाई होल स्क्वायर इन द फर्स्ट टर्म, माइनस ये चीज तो 1 हो गई, तो यू हैव माइनस 2 L square plus M square, and here the last term as it is, L square plus M square whole square is equal to 0. Or you can, if I will open the square, you can get 1 plus 4M square Y square minus 4MY minus twice L square plus M square plus L square plus M square whole square is equal to 0. So you will be getting a quadratic in y. इसको अगर मैं quadratic in y, तो you have 4m square y square, your first term, minus 4my, this is the second term, and the constant term. Constant term is 1 minus twice L square plus M square plus L square plus M square whole square is equal to 0. So this is a quadratic in y. No? This is quadratic in y, and इसके 2 रूट्स होंगे, लेकिन अगर हमें 2 इक्वल वैल्यूज चाहिए, which give 2 equal roots if your discriminant b square minus 4ac is equal to 0, है ना. क्योंकि मुझे कंडीशन निकाली टेंजेंट की, कसदा कोनिक, तो हमने इसको यहाँ पे पुट किया, इससे एक क्वाड्रेटिक बनी. इसके 2 रूट्स आएंगे, रूट्स आने का क्या हुआ कि लाइन इसे टच कर रही होगी एट मोस्ट 2, लेकिन अगर टेंजेंट है तो दे मस्ट बी सेम, सो डिस्क्रिमिनेंट मस्ट बी 0. सो डिस्क्रिमिनेंट का अगर हम निकालें b स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज योर b कोएफिशिएंट ऑफ y, क्वाड्रेटिक इन y लिया हुआ है. सो यू गॉट माइनस 4m स्क्वायर and minus 4ac. So minus 4a is this, minus 4 into 4m square, and this is whole term is c, into 1 minus twice L square plus M square plus L square plus M square whole square is equal to 0. ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व कर लें, और यू कैन हैव 16m स्क्वायर, देखो 16 आएगा, 16 यहाँ से आएगा, 16 कैंसिल आउट कर देते हैं. 16 फर्स्ट में भी आ रहा है आपके पास, 4m स्क्वायर इज 16m स्क्वायर, एंड सेकंड टर्म इज आल्सो 16. So I can write m square minus how much it is, और ये आएगा m स्क्वायर. m स्क्वायर भी हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं. चलो नेक्स्ट टर्म देखते हैं, 1 माइनस ट्वाइस होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. सो यू गॉट m स्क्वायर, एंड कॉमन लिया तो क्या आएगा, देखिए 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा. यू गॉट माइनस ट्वाइस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना. इनमें से M स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस एंड दिस टर्म. जब माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास this. ठीक है भाई. So you got this implies that, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ m स्क्वायर
अब यहाँ से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर भी हम कॉमन ले सकते हैं, बाहर एक बाहर आ जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आउटसाइड, तो व्हाट यू गॉट हियर -2, यहाँ होल स्क्वायर था तो एक बचा, -2 प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0. Now अब m I cannot take, m is not 0. Now you have, this implies that L square plus m square is equal to 2, है ना, if this is 0. तो ये कंडीशन आएगी टेंजेंसी की, बिकॉज आई एम टेकिंग m is not 0. यार m को 0 नहीं दे रहे हैं, m 0 अगर लेंगे तो इट विल सिंपली इक्वेशन Lx is equal to 1. So I am taking this, you can write since L square plus m square is not 0, sum of two positive numbers, ये 0 हम ले रहे हैं, so you will be getting this. So this is the condition of tangency for this line, that this line may touch this conic. Okay. ठीक है भाई students. So time is less than a minute is there. Class will end in a minute. So next topic आपका equation of tangents from a point. Equation of tangents from a point. Class अगर end होगी तो I will continue in the next lecture. Equation of tangents from a point.